So I'll share my screen. Screen is visible? Yes, ma'am. Okay. So you see, beta, हमने अभी तक क्या किया है? Let me just make a quick summary and then we will move on to today's lecture. Although this is repeated many times, but still. So we had this second order differential equation, which is linear, and we want to solve this equation, right? This is from where we started. Then we say the first result was that y, which is a general solution of this, is non-homogeneous differential equation, and correspondingly, if you put Rx is equal to 0, so you have this as your homogeneous differential equation. So we say that we had this result that y is equal to yg plus yp, where this is the general solution of non-homogeneous differential equation. This is what we are seeking, and this is general solution of homogeneous differential equation. And then this was the particular solution of homogeneous differential non-homogeneous differential equation, right? So we had seen methods for this. We had first method, reduction of order, and then we had constant coefficients. Have you done the tutorial sheet, beta? Third, and then you also had done Cauchy-Euler. And here we had seen in the last two classes, we were doing method of undetermined coefficients, right? So here today we will be doing variation of parameters. Method of variation. Ma'am, what is your MOUC? Method of undetermined coefficients, which we had in the last two classes. Okay, so now Okay. we with method of variation of parameters. Fine. So today's class topic is method of variation of parameters. This is a method to find out the particular solution of non-homogeneous differential equations. Right. Now you see what was the limitations of MOUC. Can anybody tell me? Anybody? बेटा बताओ मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स में पहली रिस्ट्रिक्शन तो ये है कि पी क्यू आर टू बी कांस्टेंट्स, है ना? तभी आप मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स लगा सकते हो. दूसरी क्या थी कि आर एक्स की हमने कुछ ही फॉर्म्स डिस्कस की हैं. आर एक्स वाज ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म, so obviously we want to get rid of this restrictions. So for that we have method of variation of parameters. I will write the short form MOVP. Okay beta, so these are the two restrictions. Everybody is clear that for applying method of undetermined coefficients, we want P and Q to be constants, like they has to be constants. And then also Rx was of particular form, for example, exponential, trigonometric or polynomial, or a product of exponential and trigonometric. So these are the only four cases we have discussed, although there are some more cases, but this is not available for general Rx. Okay, so let us see what is method of variation of parameters. So I will just tell you the procedure, like how we use this method of variation of parameters. Like why I will not discuss today, maybe some other class, but that is not a part of the syllabus. So what is method of variation of parameters? It says, suppose you have this equation, right? And suppose you know y1 and y2 are, or suppose yg, which is the general solution of homogeneous differential equation, is c1 y1 plus c2 y2. So you have already y1 and y2, which are the solutions of the homogeneous differential equations. Then yp will be equal to v1x y1 plus v2x y2, where v1x is equal to minus y2 rx upon Wronskian of y1 and y2. Wronskian we have already done, beta, right? Do you remember what was Wronskian of y1 and y2? This was this determinant y1, y2, their derivatives y1 dash, y2 dash. Fine, beta? Dx. And your v2 is plus y1 rx
Wronskian of y1 y2 dx. Fine. So what we are saying if we know general solution of homogeneous differential equation, then we can find out one particular solution of non-homogeneous differential equation by this method, v1 y1 v2 y2, where v1 and v2 are this, and make sure, because you need to use rx here, so your coefficient of y double dash should be 1. Okay, because this particular formulas are when the coefficient of y double dash is 1. If not, you can always divide with the coefficient of y double dash to make it 1. Right. So I will not right now I will not explain how we are getting everything. These are how we are getting these formulas. First we will be doing the problems, right? So you see, you have this problem, y double dash plus 4y is equal to secant 2x. Now you look at this problem. Question is, find the general solution of this equation. Now you see, beta, abhi aap iska, if you look at this equation, this is non-homogeneous differential equation. So you will first write that y is equal to yg plus yp, and for yg you will write the homogeneous equation, which is y double dash plus 4y is equal to 0, and then you will write the auxiliary equation, which is m square plus 4 is equal to 0. That is m is equal to plus minus 2 iota, right? Then can you tell me the solution, beta? Anybody? So yg will be, anybody? You are getting complex roots. E raised to power 0x c1 cos of 2x plus c2 sin of 2x. So you get yg as c1 cos of 2x plus c2 sin of 2x. Now for yp, what you will do for yp? Now you see, यहाँ पे right hand side क्या है बेटा? Secant 2x. Method of undetermined coefficient में कोई ऐसी फॉर्म पड़ी थी right hand side की? बेटा बोलो. There are 42 students. Nobody is saying anything. नहीं पढ़ी ना बेटा? अगर राइट हैंड साइड हमने क्या करा था मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट में, या तो e रेज़ पावर x होगा या sin होगा, cos होगा या पॉलिनोमियल होगा. सेकंड नहीं पढ़ा. So yp के लिए we will obviously use method of variation of parameters. So you will write, you will say that yp will be v1x y1 plus v2x y2, where v1x is minus y2 rx upon Wronskian of y1 y2 dx. Now let us compute the Wronskian of y1 and y2. So here your y1 is cos of 2x and y2 is sin of 2x. Does not matter if you call this as y1 and this as y2. So this Wronskian will be cos of 2x sin of 2x. Derivative of cos 2x is minus 2 sin of 2x. And this is 2 cos of 2x. So this is 2 cos square 2x plus sin square 2x, that is 1. So Wronskian is 2. So this will be minus y2 is sin 2x. What is the right hand side? Secant 2x. Coefficient of y double dash is 1. Okay, so you have to make sure upon Wronskian, which is 2 dx. Can you tell me what is this integral, beta? ln cos 2x. Yeah, so this is basically sin of 2x upon cos of 2x dx. So this will be minus 1 by 2. 2 से multiply करना पड़ेगा ना हमें. So this will be 1 by 4 log of mod of cos of 2x. Is this in clear, beta? So this is your v1x. So what will be your v2x? v2x is क्या था formula? rx, which is right hand side, into y1. y1 क्या है हमारा? cos 2x. cos 2x into right hand side, which is secant 2x by the Wronskian dx. This is 1. So this is 1 by 2x. Therefore, your yp is v1, which is minus 1 by 4 log of mod of cos of 2x into y1. y1 is your cos of 2x plus v2, which is 1 by 2x into y2, which is sin of 2x.
So this is your yp. So what is your final solution? Y will be yg plus yp. So yg is your c1 cos of 2x plus c2 sin of 2x plus yp is your minus 1 by 4 log of mod of cos of 2x into cos of 2x plus 1 by 2x sin of 2x. Now you see, this is your solution. Is this thing clear to beta everybody? सबको समझ में आ गया ये? Okay, let us do one more problem. So you have this y double dash plus 3y dash plus 2y is equal to 2 e raised to power x. Okay, so यहाँ पे लिखा हुआ है कि method of variation of parameters से करो. Otherwise, because right hand side is 2 e raised to power x, so you can also do with method of undetermined coefficients. Fine, beta. So let us do. So you have y is equal to yg plus yp. So yg के लिए you will write the auxiliary equation which is m square plus 3m plus 2 is equal to 0. So m plus 2, m plus 1 is equal to 0. So you get m is equal to minus 1 minus 2. So your y is c1 e raised to power minus 2x plus c2 e raised to power minus 1x minus 2x. Okay. Now for yp, you will say that yp is v1x into e raised to power minus x plus v2x into e raised to power minus 2x, where your v1x will be minus y2. This is your y2 and this is your y1. y2 which is e raised to power minus 2x into right hand side. What is your right hand side? 2 e raised to power x. 2 e raised to power x divided by their Wronskian. Okay, so now what is the Wronskian? Wronskian of y1, y2 will be equal to e raised to power minus x, e raised to power minus 2x, minus e raised to power minus x, minus 2 e raised to power minus 2x. So what is this? This is equal to minus 2 e raised to power minus 3x plus e raised to power minus 3x. So this is minus e raised to power minus 3x. Fine. So this is minus e raised to power minus 3x dx. So how much is this? This is plus outside e raised to power 2 e raised to power 2x dx. So this is 2 e raised to power 2x by 2. This is e raised to power 2x. v1 is e raised to power 2x. Constant of integration add नहीं करोगे क्योंकि we are computing the particular solution, right? So that is free from constants. v2x will be your y1 which is e raised to power minus x, right hand side which is 2 e raised to power x divided by Wronskian which is minus e raised to power minus 3x. This is minus 2 outside e raised to power minus x plus 3x dx. So this is minus 2 by 3 e raised to power 3x. So what is your yp? Yp is v1 which is e raised to power 2x into y1 which is e raised to power minus x plus y2 v2 which is minus 2 by 3 e raised to power 3x into y2 which is e raised to power minus 2x. So this is your e raised to power x minus 2 by 3 e raised to power x. So this is 1 by 3 e raised to power x. So what is your y? Y is yg which is c1 e raised to power minus x plus c2 e raised to power minus 2x plus yp which is 1 by 3 e raised to power x. So same answer you will get with method of undetermined coefficient also. बेटा किसी को डाउट इसमें? Anybody having doubt here बेटा? मैम ये FOVP का फायदा क्या हुआ फिर? बेटा ये देखो यहाँ पे तो दोनों लग जाएंगे, हाँ बट जी। लास्ट क्वेश्चन में देखिए ना सेकेंड एक्स है जब राइट हैंड साइड पे है ना, तब आपका वो नहीं लगेगा ना मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है मैम। और मेथड ये वाला अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आपका वो भी है ना कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं भी है तो भी लग जाएगा, अगर समहाउ आपको दो सॉल्यूशंस पता है। अगर यहाँ पे जैसे कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है तो भी ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लग जाएगा। गॉट इट? अच्छा मैम मतलब जो ये वाला मेथड है वो उसमें MOUC में भी हम यूज वहां पे कर सकते हैं ना? जैसे MOUC में क्या था बेटा कि P और Q कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है? यस मैम। यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
ठीक है। मैम हम Although उसको यूज कर सकते हैं ना फिर वहां पे भी, आई मीन कि हम एमओवीपी को एमओयूसी में भी यूज कर सकते हैं ना, हाँ मतलब। हाँ, जो क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट से होना था, हाँ ये जी हम हाँ मेथड ऑफ जी। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कर दिया। ठीक है, मतलब मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर की जो रीच है दैट इज मोर देन, ठीक है। एमओयूसी। हाँ, सो जो क्वेश्चंस आपके, these are the questions which can be solved, questions which can be solved by method of undetermined coefficient, that is a subset of which can be solved by method of variation of parameter. ठीक है बेटा, so every question which can be solved by method of undetermined coefficient that can also be solved by method of variation of parameter. ठीक है, am I clear बेटा? यस मैम। Yes. बस इसमें एक दिक्कत आती है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, ओनली वन प्रॉब्लम, समटाइम्स इंटीग्रल्स आर डिफिकल्ट टू कंप्यूट। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। तो अगर आपका कभी ऐसा क्वेश्चन हो ना जो आपका इससे भी ना हो, इंटीग्रल आपसे कंप्यूट ना हो, तो इंटीग्रल में ही छोड़ सकते हो, ठीक है। सो लेट अस सी, लेट अस लुक एट वन एग्जांपल। यू हैव दिस एग्जांपल, x y डबल डैश मैम ऊपर स्क्रॉल कर दो 1 मिनट। वेयर, पिछला क्वेश्चन, यस मैम, ओके, वेयर, जस्ट अ मिनट, थोड़ा नीचे, हियर, बस यहाँ पे। यस मैम, ओके, प्लीज नोट डाउन। मैम कर लो, नीचे कर लो। ओके, सो ये प्रॉब्लम देखिए बेटा, एक्स वाई डबल डैश माइनस 4xy इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर 2x। अब इसमें देखिए मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले मैं y डबल डैश का कोएफिशिएंट 1 बना रही हूँ। ओके, अब देखिए इसमें जो y है दैट विल बी yg प्लस yp। अब मुझे बताइए yg तो आप फटाफट निकाल लोगे, दैट इज m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, सो योर yg इज c1 e raised power 2x plus c2 e raised power minus 2x। नाउ टेल मी, यहाँ पे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट लगा सकते हो बेटा? नहीं लगा सकते ना, पॉलिनोमियल डिवीजन में है, तो यहाँ पे आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाओगे yp के लिए। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जब लगाओगे तो यू विल से yp इज v1x y1 plus v2x y2, where this is your v1 sorry y1 and this is your y2। रॉन्सकियन निकाल लो इनका y1 y2 का, that will be e raised power 2x e raised power minus 2x 2 e raised power 2x minus 2 e raised power minus 2x। So what is this? This is minus 2 minus 2. Wronskian is minus 4. Fine beta. Now let us compute v1x, that will be minus y2. y2 is your e raised power minus 2x into right hand side. Right hand side is your e raised power 2x by x divided by Wronskian dx. So this is 1 by 4 outside log of mod of x, right? And when you compute v2x, that will be y1, that is e raised power 2x into right hand side e raised power 2x by x dx divided by Wronskian. Now you see what is this? This is minus 1 by 4 e raised power 4x by x dx. So can you compute this integral? Anybody? बता सकते हो बेटा इंटीग्रल कैसे कंप्यूट होगा? इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के। बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगेगा ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब लगता है जब एक सोल्यूशन डाई कर रहा हो, मतलब एक पार्ट डाई कर रहा हो। यहाँ पे देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, e raised power 4x e raised power 4x, बार बार इसको करोगे क्या आएगा, 1 by x स्क्वायर, है ना। तो ये बाय पार्ट्स नहीं होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व इन जनरल, आई थिंक एनालिटिकली सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। तो इन दिस केस यू विल लीव योर सोल्यूशन yp as v1 which is your 1 by 4 log of mod of x into y1 was your e raised to power, y1 क्या था, e raised to power 2x into v minus v plus v2 minus 1 by 4 integral e raised to power 4x by x dx into e raised to power minus 2x. Okay, so y is yg plus yp. So you will leave this in the integral. So this is one of the drawback of method of variation of parameters कि कई बार हमसे इंटीग्रल सॉल्व नहीं होते। समझ आ गया बेटा? क्लियर है ये चीज? यस मैम। Okay,
So let us move to the last part. और उसके बाद अगर हम हमारे पास टाइम बचेगा तो we can practice some questions from tutorial sheet also and we can take doubts also. So अभी हमने बेटा ये differential equation वाला topic जो हमने किया है, इसमें हमने कौन कौन सा you have done chapter 4 and 5 from Jan and Iyengar book. तो fourth chapter में we have done first order and fifth chapter में we have done second order. So this is just differential equation is a very vast subject. So this is just an introduction बेटा, ठीक है, जितना हमने किया है. And I have told you in the first lecture itself there are so many applications of differential equations. So we will just look at one of the application so that you have an idea कि exactly आप real life में कैसे लगा सकते हो, ठीक है. So we are discussing one application of differential equation in electric circuits. Okay. So application of differential equations in electric circuits. Okay, beta. So you know that we have an electric circuit, we have a battery, and then we can have resistance, we can have, ये सबने पढ़ा होगा ना, मुझसे ज्यादा ही पता होगा आपको, capacitor, and we have an inductor, right? So and around everything there is a voltage drop. Fine, we denote Q charge and I is current. क्या relation होता है Q और I में बेटा? What is the I relation? equal to Q by Right. So I basically 20 current is rate of change of charge, right? And suppose this resistance is R, and this is capacitor, capacitance is C, and this is inductor, inductance is L, right? And this is your battery. So what is the voltage drop across R? Can you tell me better? I R. into R. IR. I to R, right? So if I is the current flowing, then the voltage drop across R is IR. What is the voltage drop across the capacitor? XC into R. Sorry ma'am. Q by C. Q by. सबको याद है ये? आपने पढ़ा होगा ना किरचॉफ्स लॉ अभी +2 में. मैंने तो बहुत टाइम पहले पढ़ा था, आपने तो अभी पढ़ा होगा. और इंडक्टर के अलोंग L by L by by L di by dt बेटा. L Q होता है ना, सॉरी L di by dt, नॉट L Q, d2 Q by dt2, ये होता है ना बेटा. अगर नहीं याद तो यू कैन जस्ट लुक अराउंड, ये देख सकते हो आप एक बार. बट दीज आर द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस द resistor, capacitor and inductor when a current I is flowing in your circuit. Fine beta. And then we have something called Kirchhoff's law. क्या होता है वो? incoming current Yeah, so it says that E is equal to जो भी Zero. बाकी है IR plus total E is 0. Yeah, and इसके across और इनके across sign opposite होते हैं, इसलिए we get E is equal to IR plus Q by C plus L di by dt. Clear beta? And what is this? This is a differential equation. This is a differential equation. Can you see beta? Clear? इसको हम uniform बनाने के लिए what we can do? Put I is equal to dq by dt. So this becomes d2q by dt2 into L. ये वाली टर्म लिखी है मैंने. Plus ये वाली टर्म लिखूंगी मैं R dq by dt plus this is 1 by cq is equal to E. Can you see? This is the second order differential equation. जो अभी हमने ऐसी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले ना बेटा, समझ आया? Is this thing clear? This derivation, this equation is clear to everybody? So this is the equation with which you can find out Q in your circuit, and then once you find out the Q, you can find out the current by differentiating Q with respect to time. Clear beta? किसी को डाउट बेटा यहाँ तक? और there is one more form which is useful. उसमें क्या करते हैं हम? This is star. Let me call it star. If you differentiate this equation here, this equation with respect to I, if you differentiate with respect to I,
इस इक्वेशन में अभी प्रॉब्लम क्या है कि Q और I मिक्स है और दोनों डिपेंडेंट है, तो दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, हमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल लेके आना है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू I कर रही हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास dE by d sorry with respect to sorry not I with respect to t, okay, so dE by dt is equal to R, I'm assuming R, L and C they are constant, di by dt plus 1 by C dq by dt plus L d2I by dt2. Now what is this? What is this dq by dt? I. I, right? So this equation becomes L d2I by dt2 plus 1 by plus R di by dt plus 1 by C I is equal to dE by dt. Okay, so both these equations are useful. Sometimes this form is useful, star one, this is in Q, this is in Q, and sometimes this equation is useful, this is in I, this equation is in I. Okay, you are assuming that L R C, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया है तो मैंने R बाहर लिख दिया ना, तो वी आर assuming L R C are constants. ठीक है, जब ये डिराइव किया, ठीक है, इसकी डेरिवेशन में हमने ऐसा कुछ नहीं यूज किया है, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली है. Is this in clear बेटा? Okay, so we will these equations you should know. Let me do some problems. क्वेश्चन देखिए, अ सर्किट, और ये सीरीज में लगी हुई हैं चीजें, राइट? अब पैरेलल में लगी होती हैं तो देन यू हैव डिफरेंट लॉज, है ना, उसका अलग इक्वेशन बनता है. अ सर्किट हैज इन सीरीज an electromotive force given by E is equal to 100 sine of 10t 40t sine of 40t. This is your battery volt, V इसका जो भी unit है volts. A resistor of 10 ohms and an inductor of 0.5 H. H क्या होता है बेटा? कौन सा यूनिट है ये? Henry. हेनरी. ठीक है. If the initial current is zero, find current at time t greater than 0. क्वेश्चन समझ में आया बेटा? पढ़ लो एक बार स्टेटमेंट सब लोग प्लीज. So you have a resistor and you have a capacitor, sorry inductor, capacitor नहीं है, E. ठीक है बेटा? So what is the voltage drop across this resistor? Ri, R कितना दिया हो? 10. And what is the voltage drop across this inductor? Inductor के across क्या है आपकी? L di by dt. So you have inductor के across है आपकी L di by dt. क्लियर है ना बेटा सबको? L कितना दिया हुआ है आपको? 0.5. So आपके पास किरचॉफ लॉ क्या कहता है? E is equal to L di by dt plus 10I. Right. So this equation you can easily solve. L is 0.5. So you'll get di by dt plus, divide कर दो 0.5 से. What you will get? 20I is equal to 200. E की वैल्यू दे रखी है ना? 100 sine of 40t. Can you solve this equation? Yes बेटा. कौन सा है ये? कौन सी इक्वेशन है? Maybe वो वाली फर्स्ट ऑर्डर है ना? first order linear. Linear है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e raised to power 20 dt. So that integral, so e raised to power 20t. So solution is I into e raised to power 20t is equal to your right hand side into integrating factor dt.
Okay, so integration कर लोगे. So what you will get in the end is e raised power 20t is equal to, इसको integration by parts करोगे बेटा, ठीक है. So let me write down what you will get. You will get 2 e raised power 20t sin 40t minus 2 cos of 40t. कर लोगे ना integration सब लोग by parts plus a constant of integration. अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो. कोई और इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में? ये लिखा हुआ ना, इफ द इनिशियल करंट इज 0. फाइन, तो हमें ये भी यूज करना है. इनिशियल करंट 0 मतलब एट t इज इक्वल टू 0 i इज 0. इसको आप और अच्छे से लिख सकते हो, इससे डिवाइड कर दो. सो you'll get 2 cos sin of 40t minus 2 cos of 40t plus a e raised to minus 20t. Now at t is equal to 0, I is 0. Therefore, what you will get? Put it here. So you'll get 0 is equal to 2. t को 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. Minus 2. t को 0 पुट कर दोगे ये 1 हो जाएगा. Plus a. So a की वैल्यू क्या आ गई? 4. So you will use that information to compute the value of the constant of integration. So what is your I? Therefore, I is equal to 2 sin of 40t minus 2 cos of 40t plus 4 e raised to minus 20t. So this is the solution. This is I for any time t. So you can just put the value of t to get your I. आया समझ बेटा सबको? समझ आ गया बेटा ये चीज? यस बेटा. बाय Yes. पार्ट्स वाला जो पार्ट है इसमें वो हमने बाहर 2 लिया, 200 नहीं लेना चाहिए था. डिवाइड हो जाएगा बेटा 20 से ना, कुछ होएगा. देखो 200 लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करोगे ना, डिवाइड होके फाइनली ये आएगा. ठीक है बेटा? ओके मैम, ओके मैम. कैलकुलेशंस कर लो आप खुद. ठीक है भाभी? ओके, एनीथिंग एल्स? एनी अदर डाउट? एक और करें बेटा ऐसी प्रॉब्लम जिसमें सेकंड ऑर्डर बनेगा? यस नो? एक और करवाऊं कि खुद करोगे? मैम करवा दो. So let us do this problem. A circuit has in series an electromotive force given by E is equal to 100 sin 60t volts, a resistor of 2 ohms, an inductor of 0.1 Henry, and a capacitor of 1/260 farads. Okay, if the initial current and the initial charge in the circuit are both zero, then find the charge at any time t greater than 0. Then find the charge at any time t greater than 0. फाइन बेटा. कौन सी फॉर्म यूज करोगे फिर आप बताओ? क्वेश्चन समझ में आ गया? तीनों चीजें हैं आपके पास, रेजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, और ये आपकी बैटरी लगी हुई है. सो यू हैव दिस इक्वेशन, राइट? क्यू हमने निकालना ना, टी बाद में निकल जाएगा. सो यू विल यूज दिस इक्वेशन, राइट? सो यू हैव L dq by d2 q by dt2. अगर नहीं याद है तो वहां डिराइव कर सकते हो फटाफट, पर इट्स बेटर कि आप याद रखो क्योंकि सिंपल है, ज्यादा मुश्किल है नहीं. प्लस r dq by dt प्लस क्या था 1/c q is equal to E, right? This was the equation.
So L here is your, how much is L? 0.1. So that is 1 by 10 d2q by dt2 plus R is your 2 dq by dt plus C is 1 by C is 1 by 260. So 1 by C will be 260, right? Q is equal to E. E is your, E with your 100 sin 60t. So ये क्या बन गई आपकी d2q by dt2 plus 20 dq by dt plus 2600 q is equal to 1000 sin 60t. ये कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा? कैन यू सॉल्व इट? कैसे करोगे? ये क्या है? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. सो q विल बी yg प्लस yp. yg कैसे निकलेगा? You will write the auxiliary equation m square plus 20m plus 2600 is equal to 0. तो यहाँ से m निकालिए. m will be minus 10 plus minus 50i. I ये आयटा है, ठीक है, नॉट द करंट. ठीक है, तो आपके पास yg क्या आएगा? c1 e raised to power, सॉरी क्या आएगा बताइए बेटा? कॉम्प्लेक्स रूट्स है ना. e raised to power minus 10t c1 cos 50t प्लस c2, मैंने साइन लिया हुआ है, कैलकुलेशन मैच करेंगे इसलिए मैं लिख रही हूँ, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता. साइन 50t प्लस c2 cos of 50t. गॉट इट बेटा? समझ आ गया ये? यस नो बोलो बेटा. हाँ जी मैम क्लियर है. Yes, ma'am. अब yp कैसे निकालोगे? कैन यू टेल मी? लुक एट द राइट हैंड साइड एंड टेल मी yp निकालने का अच्छा मैम तरीका. MOUC यूज करके. यूज कर लो, वैसे MOVP भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट MOVP थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि देखो यहाँ पे y1 क्या है? e raised to minus 10t sin 50t. उसका रॉन्स्की निकालना उसका पड़ेगा. निकालना इज डिफिकल्ट. MOUC में क्या करोगे आप? क्या देखोगे? इज इट द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस? इज इट द सॉल्यूशन ऑफ नो होमोजीनियस? मैम नो मैम नो मैम. एवरीबॉडी देखो यहाँ पे 60t है और यहाँ पे यहाँ 50t है. So if this is not the solution of homogeneous, then by MOUP you will assume YP is of this form: A sin 60t plus प्लस B B cos cos. 60t. अब इसको आप अपनी इक्वेशन में पुट करोगे स्टार में. Put it in star to compute A and B. मैं फाइनल लिख रही हूँ. So what you will get? कंप्यूट कर लेना बेटा. A will be minus 25 by 61. B will be minus 30 by 61. तो आपका solution क्या हो गया? Therefore, your Q will be YG, which is e raised to power minus 10t, C1 sin 50t plus C2 cos 50t plus this YP. YP, A and B are here. So this is minus 25 by 61 sin 60t minus 30 by 61 cos 60t. Right? Are we done? क्वेश्चन में और भी दिया हुआ ना कि इनिशियल करंट एंड टाइम इज करंट एंड चार्ज इज 0. तो उससे हम C1 C2 निकालेंगे. मैं वो C1 C2 ले रही है. हाँ, इट इज गिवन दैट एट t is equal to 0, q is 0 and I is 0. I 0 means dq by dt is 0. राइट? समझ आ गया ना? सो आपके पास ये निकालो, ये पुट करो. पहले तो dq by dt निकाल लो. वो निकाल के कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है. ये जब आप इक्वेशन कंडीशंस पुट करोगे so what you will get C1 is equal to 30 by 61 and C2 is equal to 30 by 61. ये आएगा. तो यहाँ पे पुट कीजिए Q is equal to e raised to power minus 10t C1 30 by 61 C1 sin, C2 है ना? C1 C2 की वैल्यूज आ गई ना बेटा? प्लस सेम ही है. हाँ सेम ही आई है. बाहर निकालने minus 25 by 61 sin 60t plus minus 30 by 61 cos 60t. Okay beta, so we are done with this chapter. Indeed we are done with our topic of differential equations. So what we can do is, मैंने ना आज ट्यूटोरियल भी लिया था इनका, तो ट्यूटोरियल की वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी अपनी वेबसाइट पे और नोट्स भी. और आप लोगों का थर्ड ट्यूटोरियल सबका शुरू हो गया है? थर्ड ट्यूटोरियल शीट सबने मैम शुरू क्लास ही नहीं हुई है अभी तक ट्यूटोरियल की. एक भी नहीं हुई? मैम एक हुई थी मैम, मतलब यहाँ पे ऑनलाइन में नहीं हुई है अभी तक. अच्छा अच्छा ठीक है.
हाँ जी कौन कौन लेता है आप लोगों का ट्यूटोरियल्स? Let me just stop the recording, then we will talk. Okay.